सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। बट आपने आपने अपनी रेगुलर क्लासेस में पढ़ा होगा, अगर आप उससे थोड़ा सा हायर का पढ़ना चाह रहे हैं, लाइक सम एक्स्ट्रा टॉपिक, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। ओके, सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले देखिए, हम जानते हैं हमारे पास जो है परमिएबिलिटी क्या होता है। So if you will see permeability, it is about, we can say, ये एक मेजर होता है जिससे हमें पता चलता है एक सब्सटेंस की एबिलिटी टू सपोर्ट फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? परमिएबिलिटी। ठीक है, या कहेंगे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, हम इसको इधर पर कहेंगे। सो ये हमारे पास क्या होती है? ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स के लिए। एंड परमिएबिलिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय म्यू। ठीक है, एंड हमारे पास एक जो है, इट इज अ ग्रीक वर्ड। ठीक है, ये म्यू क्या है? इट इज अ ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड है। एंड इसको जो है बेसिकली हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, ओलिवर, उन्होंने इसके लिए इसका मतलब कहा कि इसके लिए इसका यूज किया जाए, इसकी डिनोशन के लिए। ओके ओके, इसके बाद अगर हम देखें, हमारे पास क्या देखना है हमें इसके रिलेटेड? हमें देखना है कि ये जो परमिएबिलिटी है, जिसे हम किससे, म्यू से डिनोट करते हैं, वो फ्री स्पेस में कितनी होती है? फ्री स्पेस, या कहो तो वैक्यूम। वैक्यूम में म्यू की क्या वैल्यू होती है? दैट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर। और इसके बदले आप रिप्लेस कर सकते हो इसको जो है टेस्ला मीटर पर एम्पेयर स्क्वायर। ओके, लाइक वैल्यू इज द सेम। अब क्वेश्चन में जो देकर के हो वो यूनिट आप क्या कर देंगे? यू विल यूज दैट वेरी यूनिट। Okay, so there is one more thing we need to discuss about it, and that is about relative permeability. किसके बारे में? Relative permeability। रिलेटिव परमेबिलिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? रिलेटिव परमेबिलिटी को हम म्यू आर से डिनोट करते हैं। म्यू आर क्या है? इसका डिनोशन। एंड रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है? कि एक मीडियम की परमेबिलिटी विद रेस्पेक्ट टू परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की परमेबिलिटी। ठीक है, इनका आपस में हम रेशियो लेते हैं। क्या लेते हैं? रेशियो। एंड उसी को हम ये कहते हैं, उसी को हम रिलेटिव परमेबिलिटी कहते हैं। अब लिखते कैसे वो बता देता हूँ। सो म्यू आर किसके बराबर होगा? यानी कि रिलेटिव परमेबिलिटी, हमने पढ़ा होगा ना ये, ऐसे हम कहते हैं। अभी आई एम नॉट गेटिंग केयर, देखिए एग्जाम्पल थी मेरे पास, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट। ओके, आई फॉरगॉट, याद करते हैं बाद में, इफ आई गेट दैट। नहीं, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, लीव इट। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं? हम इसको पहले हम रिलेटिविटी को पढ़ेंगे, रिलेटिव एंड देन परमिएबिलिटी। सो वो किसके बराबर होती है? दैट इज इक्वल टू, वी हैव म्यू अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, एंड उसी के बाद अगर आप क्या करेंगे, अगर आपको उस मीडियम की परमेबिलिटी निकालनी हो जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी लेकर के है, देन यू कैन इंटरचेंज इट। सपोज न्यू इज इक्वल टू न्यू आर मल्टीप्लाई बाय न्यू नॉट। ठीक है, सो ये दो यू नीड टू लर्न। नाउ अब हम देखते हैं हमारे पास, ये मैंने क्यों पढ़ा है? बिकॉज आई वांटेड यू टू understand the classification of magnets। okay,
sorry, classification materials on the basis of permeability और relative permeability। देखिए, तीन है हमारे पास, इनके बारे में हमें डिस्कस करना है। सबसे पहला अगर हम देखें, वी आर हैविंग द डायामैग्नेटिक, देन वी हैव पैरामैग्नेटिक, and then we have ferromagnetic। ओके, अगर आप देखेंगे जो डायामैग्नेटिक होती है, इनकी जो परमिएबिलिटी है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, वो 1 से छोटी होती है एंड 0 से बड़ी होती है, या 0 के इक्वल होगी। ठीक है, क्या होगी? इट विल बी ईदर इक्वल टू 0 और लेस देन 0, सॉरी, और ग्रेटर देन 0, एंड ये लेस देन होगी किसके? ये लेस देन होगी इसके। एंड इनको क्या करता है, क्योंकि रिलेटिव परमिएबिलिटी कम होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनको रेपेल कर देता है। क्या कर देता है? रेपेल कर देता है। ठीक है, या ये क्या करते हैं, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वो उसको क्या कर देगा? रिपेल कर देगा। उसके बाद हमारे पास पैरामैग्नेटिक होती है, जिनकी रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है? वो 1 से बड़ी होती है, एंड इन्हें क्या करती है? दे आर अट्रैक्टेड। मैग्नेटिक फील्ड इनको क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। वही आप फेरोमैग्नेटिक को देखेंगे, इनकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है वो 1 से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है, इसीलिए ये क्या होते हैं? ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं इसके साथ। ठीक है, इसीलिए जब आपने सोलेनॉइड का पढ़ा होगा, ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं दैट वी आर एडिंग, सॉरी, वेट गाइस अ मिनट, उसके बाद हम कहते हैं दैट वी आर एडिंग व्हाट? वी आर एडिंग आयरन इनटू इट, आयरन रॉड हम इसके अंदर डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? ताकि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सके? ये क्या हो गया? ताकि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सके? इंक्रीज हो सके। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज हो सके। क्यों? क्योंकि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, बिकॉज आयरन इज अ फेरोमैग्नेट, आयरन क्या है? एक फेरोमैग्नेट है, तो उसकी वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रांग बन जाता है, क्योंकि ये अट्रैक्ट करता है। जो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्राउड हो जाती है, ठीक है, और पास आ जाती है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, सो दिस वाज बेसिक अबाउट इट। अब हम देखते हैं जो हमारे पास, जो आपने पढ़ा होगा करंट कैरिंग के बारे में, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। एक्चुअली मेन टॉपिक वाज दैट, बट ये चीजें उससे पहले जरूरी थी। सो magnetic field will consider अब due to various, सॉरी छोटा लिख देता हूँ, various current carrying conductors। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के बाद, जो आपने इस तरीके से पढ़ा होगा, ठीक है ना, उसके बाद में हम पढ़ेंगे। देखिए, इसमें हमारे पास दो चीजें देखने को मिलती है कि इसके रिलेशंस की अगर मैं बात करूं, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो जितना अब इसके थ्रू करंट को, पहले आपको इतना तो पता होगा कि इससे क्या होता है, करंट फ्लो कर रही है, सो एक मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है इस वायर में, ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट और ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ड्यू टू द फ्लो ऑफ प्रोटॉन, जो आप कहें इसको, ठीक है। So it is directly proportional to current. That means the more you, like, you are adding current, or we can say the more supply of current you are providing, electrical current you are providing, more is the magnetic field or more stronger is the magnetic field। और वही ये किसके inversely proportional होगा? ये R इधर पर याद रखिएगा, this R is here perpendicular distance। दैट मीन्स जितना आप इससे दूर हो रहे हैं, उतना ही इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है?
डिक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की पावर क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की पावर क्या हो रही है, इट इज डिक्रीजिंग. सो वी कैन मेंशन इट लाइक दिस, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इनवर्सली टू द R. रिमेंबर आप R उसके बाद भी पढ़ेंगे जहां पर इसे एज डिस्टेंस सॉरी एज रेडियस यूज किया जाएगा, बट हम इधर पर D भी यूज कर सकते, या वहां पर हम D यूज कर सकते, बट ताकि हमें ये जो याद हो जाए रहे हमें ये सारी चीजें, फॉर दैट पर्पज वी आर राइटिंग दीज थिंग्स. ठीक है ना. अब यहाँ पर सबूत में D, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेम सेम ये है फॉर्मूलाज है, तो वो ऐसे ही याद रह जाती है. ठीक है. तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आर. इसको प्रोपोर्शनलिटी की साइन हम रिमूव करते हैं, हम लिखते हैं न्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. ठीक है. ये हम इधर पर लिखते हैं, एंड पाई आपको पता ही अच्छा न्यू नॉट की वैल्यू मैंने उधरी पर कह दी थी, है ना. इधर पर मैंने आपको न्यू नॉट की वैल्यू बताई थी ना, यही वैल्यू उधर पर न्यू नॉट की है, कोई नई वैल्यू नहीं आ रही है. ठीक है. फिर भी स्टिल आई विल मेंशन इट है दैट हमारे पास न्यू नॉट क्या है, इट इज सॉरी परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड इसकी वैल्यू कितनी होती है 10 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर. एंड आई हमारे पास करंट है, और पाई हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 22/7 और 3.14 जो आप यूज करना चाहेंगे. और रिमेंबर एवरी टाइम रिमेंबर व्हाट दिस आर इज. दिस आर इज नॉट रेडियस, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके. अच्छा लिख ही देता हूँ इधर पर, मैंने इतना शॉर्ट क्यों कर दिया इसको. लेट मी राइट इट है, इट इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है. So this was about the current carrying by a straight this current carrying conductor. ठीक है. So now let's have a numerical on it. Okay, पेज ऐड कर देता हूँ. क्वेश्चन एक लिखिए. क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस कि हमारे पास एक क्वेश्चन बता देता हूँ. हमारे पास क्या है, हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, जिसके पास करंट कितनी है, हमारे पास करंट उन्होंने 5 एम्पियर रख दी है. किसमें, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है. ठीक है. जिसमें करंट कितनी है, दैट इज 5 एम्पियर. ठीक है. उसके बाद अगर देखिए जो हमारे पास हमें क्या ढूंढना है, वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड. ठीक है. वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो सपोज हमारे पास इस तरीके से ये एक वायर है, एंड एक पॉइंट P इधर पर है. ये करंट कितनी इसके अंदर है, 5 एम्पेयर है, एंड इसकी डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर है इस पॉइंट P की इस करंट कैरिंग कंडक्टर से. हमें इस पॉइंट P पर का मैग्नेटिक फील्ड बताना है. ठीक है. इट्स वेरी सिंपल. हाउ हमारे पास पता है इसकी फॉर्मूला क्या होगी. ठीक है ना. क्या है, न्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर. ठीक है. R इज परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इट. लाइक आप ऐसे डिस्टेंस को नहीं लेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है. ओके. सो ये हम इधर पर आ गए. तो न्यू नॉट की वैल्यू क्या है वो बाद में है. अच्छा डाल लीजिए अभी 10 ठीक 2 पाई इंटू 10⁻⁻7 4 है इधर पर. 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और करंट है हमारे पास 5 एम्पेयर, और 2 इंटू पाई ही लिख दो क्योंकि एक पाई कैंसिल कर दिए, पाई पाई कैंसिल कर देंगे, इंटू रेडियस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 2, पाई और पाई कैंसल, ये और ये कैंसल, सो इट इज 5 इंटू 10⁻⁻7. एंड रिमेंबर इसका मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या था, दैट वाज टेस्ला और टी. सो इट इज टेस्ला. ओके. सो इफ नाउ वी विल आस्क यू कि आप इसका क्या ढूंढिए, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बताइए. तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे दे सकते हैं, ऑब्वियसली राइट हैंड थंब रूल से बताएंगे. तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट P पर, वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा किसके, प्लेन के, और किस डायरेक्शन में होगा, ये होगा इसके अपवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है.
जो हमारे पास इधर पर मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, वो प्लेन के तो परपेंडिकुलर होगा ना भाई, प्लेन है तो प्लेन को परपेंडिकुलर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड, और कहाँ की तरफ होगा, तो उसका मतलब है दैट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, जो इधर पर आप मैग्नेटिक फील्ड अगर चेक करेंगे वो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ आपको देखने को मिलेगा। सो दिस वाज अबाउट इट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट बाय कॉइल। सेकेंड है हमारे पास कौन है, उधर पे मैंने स्ट्रेट वायर लिखा था, अब लिखेंगे हम सर्कुलर कॉइल। देखिए दो चीजें तो सबसे पहले इसमें क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे कि जो हमारे पास ये सर्कुलर कॉइल है इसका हमें बताना है। ठीक है, सो सर्कुलर कॉइल में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ऑब्वियसली पहले मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जितनी करंट उतना मैग्नेटिक फील्ड होगा। दूसरी बात है कि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, दिस इज हियर द रेडियस। अब रेडियस की क्यों है, क्योंकि आप देखिए जितना ही छोटा होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, सपोज इधर पर इस तरीके से बना रही है, इधर पर इस तरीके से बना रही है, अब देखिए ये छोटा होगा तो इधर पर ये कोलाइड कर रही है, जितना जितना आगे बढ़ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी उतनी इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या हमें देखने को मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड की पावर बढ़ रही है। सो जितना रेडियस घट रहा है उतना पावर बढ़ रही है मैग्नेटिक फील्ड की। सो अगर आप इसको लिखने की कोशिश करेंगे वी कैन राइट इट एज B is directly proportional to I upon R, and to remove the proportionality B is equal to nu naught I upon 2R. Pi isn't here. Okay, so this is the formula for finding the magnetic field of this. So now if you will see हमारे पास क्या होता है, one second here. So हमारे पास क्या होते हैं, आइडेंटिकल लूप्स होते हैं। अगर कोयल के पास जितने लूप्स है, सपोज n नंबर ऑफ लूप्स अगर हमारे पास है और रेडियस उसका r है, तो हम b को लिख सकते हैं न्यू नॉट i इंटू नंबर ऑफ लूप्स, और ये पर यूनिट, अच्छा मैं ऐसे लिख देता हूँ न्यू नॉट i अपॉन 2r, तो वही रहेगा, इंटू हम करेंगे नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ, दिस इज पर यूनिट लेंथ। तो ये उधर पर आपकी फॉर्मूला बन जाएगी। ठीक है, तब आपकी फॉर्मूला ये बन जाएगी, यू कैन यूज दैट ऑल्सो दैट। ठीक है, कि बी क्या बन जाएगा, न्यू नॉट आई 2 पाई, 2 पाई तो उधर ही है, हम नंबर ऑफ अगर बहुत सारे लूप्स है अपॉन एल। ठीक है, सो बी किसके आएगा, न्यू नॉट आई एन अपॉन 2 पाई एल। ये भी आप याद कर सकते हैं। नाउ मूविंग फर्दर, अगर आप इस पर देखेंगे और एक चीज आपको याद रखनी है, देखिए ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, सो इधर से करंट फ्लो करेगी। ओके, देखिए अब क्या होगा, अगर मैं इधर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखने की कोशिश करूं, हाउ विल इट बी, इट विल बी लाइक दिस। सॉरी, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये सपोज इधर पर मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर मैं इधर पर भी मैग्नेटिक फील्ड बनाने की कोशिश करूंगा, सो इधर का मैग्नेटिक फील्ड अगर हम राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे सो वो इस डायरेक्शन में होगा, एंड अगर आप उधर पर जो है राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे वो किस डायरेक्शन में होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। कहाँ गया भाई मार्कर, या इस डायरेक्शन में वो आपको देखने को क्या मिलेगा, राइट हैंड थंब रूल से। अब यही हम कहां पर यूज करते हैं, यही हम यूज करते हैं किस पर, वी यूज द सेम इन द सोलेनॉइड, सॉरी नॉट इन द सोलेनॉइड, इन द सर्कुलर लूप। तो सर्कुलर लूप को जब आप देखेंगे, अगर उसमें करंट इस साइड से फ्लो कर रही है, सपोज मैंने इसको इधर पर कनेक्ट कर दिया है किसके साथ, बैटरी के साथ, सो अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, सो आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, सो मैग्नेटिक फील्ड भी आपका इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें इस टाइप का देखने को मिला, इट डिपेंड्स अपॉन द करंट। ठीक है, करंट पर देखने को मिला, करंट कहां से फ्लो कर रही है। वेट कीजिए, आई थिंक इधर पर ये नहीं करते हैं, इसको चलिए रखते हैं उधर पर, या so this is my circular loop,
सपोज करंट यहाँ से फ्लो कर रही है, निकालो इधर पर कैसा रहेगा, ठीक है, बताइए इधर पर कैसा रहेगा। इधर पर जो हमारे पास फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, उसकी डायरेक्शन ये रहेगी। एंड इधर पर जो फील्ड बन रहा है उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, उसकी डायरेक्शन इसके ऑपोजिट ये रहेगी, ठीक है ना। सो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर देखिए, अगर हमारे पास देखने को मिलता है, अगर हमें देखने को मिलता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है करंट और मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज है, तो हमारे पास कौन सा पोल डेवलप हो जाता है, एक साउथ पोल डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है, उसे हम साउथ पोलैरिटी कहते हैं। क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए इधर पर हमें क्या हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी में घुस रही है, किसी में जा रही है ना, दे आर गोइंग समवेयर। एंड ऐसा ही किसी में होता है कि किस में एंटर होती है, मैग्नेट में नॉर्थ से निकलती है एंड साउथ में जाती है, सो दैट्स व्हाई इट्स एक्टिंग एज अ साउथ पोल। वहीं इसमें देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमर्जिंग आउट, है ना, दे आर इमर्जिंग आउट अगर आप देखेंगे, ठीक है, और इमर्ज कहाँ से होती है, नॉर्थ पोल से होती है। सो दिस विल डेवलप अ नॉर्थ पोल, दिस विल डेवलप अ नॉर्थ पोल। इस तरीके से हम इसको ये लिखते हैं, नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा इधर पर, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट इट। सो नाउ लेट्स हैव अ क्वेश्चन अपॉन इट कि हमारे पास जो है एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, हमारे पास क्या है, वी आर हैविंग अ सर्कुलर लूप विच इज, इसको बंद कर देते हैं, हाँ, which is having radius of how much meter, it is having 0.4 meter of radius, and the current which is flowing through it, current is given to us to be 12 ampere. We have to find the magnetic field at the center of this loop. जो ये लूप है ये बेसिकली ऐसे होगा ना, ये मैंने बंद कर दिया बट बंद तो नहीं होगा ना। तो इस सेंटर पर हमें ढूंढना है, इसका क्या ढूंढना है, वी हैव टू फाइंड इट्स मैग्नेटिक फील्ड। एंड वी नो मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे ढूंढते हैं इसका, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, सॉरी 2 आर, ठीक है। सो म्यू नॉट कितना होगा, कहाँ था मैं, हाँ, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू करंट इज 12 upon we have 2 times r. How much is r given? r is 4. Okay, so if you सीधे लिख लेता हूँ, अगर मैं 2 टाइम्स इसको लिखने की कोशिश करूँ, so that will be 8 और 0.8 आ जाएगा, ठीक है ना। Give me a second. Yeah. So 0.8 आ गया। अब देखिए मैं 0.8 को कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज 8/10, इज इट ना, 8/10 लिख सकता हूँ, उस 10 को ऊपर भेज लो। सो हमारे पास आएगा 4 पाई इंटू, ओके, सो 4 पाई इंटू 10⁻6 इंटू 12 अपॉन 8। सो 4 1s are 4, 4 2s are 8, 2 6s are 12, so this will be 6 pi into 10⁻⁻6। ओके, ये माइनस, ठीक है, ये -6 आ जाएगा। फिर अब अगर आप पाई की वैल्यू भी दे दोगे, ठीक है ना, तब जो आंसर होगा वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इधर पे लिख लेता हूँ 6 पाई इंटू 10⁻⁻6, पाई की वैल्यू दे दो, 6 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻6, सो 6 4s are 24 और 6 1s are 6 8, 6 3s are 18 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड विच इज जनरेटेड बाय अ सोलेनॉइड, ओके, बाय सोलेनॉइड। Solenoid is nothing but it is just the collection of these circular loops. When we are like this type, we are collecting them, so obviously it will have greater magnetic field because many magnetic field are there connected to each other. Okay, so now where we can decide it, we have, suppose first of all it will be obviously we have current, okay, so magnetic field will be directly proportional to current. How much the current it is in every case,
Okay, magnetic field is directly proportional to current, and a magnetic field is directly proportional to the number of turns per unit length. We generally write this as N, and then we say like this: B directly proportional to N, then N is equal to number of turns per unit length. This way we also mention it. Okay, but yeah, magnetic field is directly proportional. What is the fun of writing it thrice and four times? Let's write it only one times N upon L. Okay, so magnetic field is directly proportional to number of turns per unit length. If per unit length number of turns are greater, okay, so then obviously we will have a greater amount of magnetic field, and if it is vice versa, then the magnetic field will be less. Okay, suppose I'm having 16 turns per unit length. Okay, so obviously magnetic field will be more, and if I am having two rounds, or we can say two turns, so this will be very less, magnetic field will be less. So that is what I am trying to say. So we can conclude this definition as Ni upon L, and to remove this proportionality we are using mu naught Ni upon L, or we also write it as B is equal to mu naught In. Okay, then we say that this N is equal to sorry, this is N by L. N is equal to M by L. Okay, so this is the way we can also mention it. Okay, so let's have a question on this also. What the question is saying? What the question is saying? It is saying that find the ratio. This is given to you the magnetic. Sorry. This is the solenoid. Okay, this is the solenoid, and the current is flowing in this direction, and we are told to find the magnetic field at point A and this point B. Okay, this the given. So we basically know that magnetic field is uniform. Inside this solenoid, magnetic field is always uniform as the bar magnet, because solenoid acts as a bar magnet. If you have studied it, let me again draw this. Yeah, so if this is, so this will develop a north polarity, and suppose this is happening here, or I'm just drawing the randomly these. So inside it we can see that there are straight lines, and straight lines means that there is uniform what? There is uniform magnetic field, and uniform magnetic field means the magnetic field which the A is observing is the same as the, we can say, the force that A is observing due to the magnetic field. It is the same as the B. So if I will say the force on A due to the magnetic field is equal to the force on B due to the magnetic field, then if I will take this here like this, I'll take it here, so it will be in divide Bm, which is equal to 1. Okay, or we can say the ratio is 1:1, which we were asked to find. So these are some questions related to it. You can like solve further more questions if you want to solve upon this. Okay, one more question we'll try to solve next in the page. So this is the graph. Okay, 1 minute. Let me write the question also. It is an MCQ question. Graph that shows magnetic field due to current in a long solenoid. Okay, so now I'll make the graphs here. The first, second, third, and fourth. Okay, so we have
this, we have this, and we have this, we have this. A, B, C, and D. Okay, remember that this is इधर लिख ही लेता हूँ. This is magnetic field and this is current. Magnetic field, current, magnetic field, current, and magnetic field and current. Now tell. Okay, I hope you have answered it correct. The correct answer is option D, because we have in solenoid that the magnetic field is increasing with increase in the current. If you have forgotten, let me take you back to this. See, so the magnetic field is increasing with increase in current. That means this very graph is the correct representation, because see, if here this much is the magnetic current, so the magnetic field is this much, and if I will go here, so current is less, magnetic field is also less, current is more, magnetic field is also more. So this is completely wrong, this is wrong, and this is wrong, and the correct answer is that. So obviously magnetic field is not decreasing with decrease in the current or increase in the current. Now let's go, well, not let's go, let's add another slide. Let me see now the force on a current carrying conductor. Force on a current carrying conductor placed in a magnetic field. Okay, so when a current carrying conductor, when we place it in the magnetic field, it experiences a force. Okay, and we can give the magnitude of the force, that is equal to, more the magnetic field, more will be the force. Oh God. More the magnetic field, more will be the force. More the charge of the object or the current carrying conductor, more will be the force. Okay, also more the velocity, more will be the force, and the angle it makes with the magnetic field. Okay, this angle between the direction of the current, in which the direction current is going, and the direction of the magnetic field. Okay, between the direction of the current and the magnetic field, this is the sine theta, or you can say the component of the current and the magnetic field. This theta represents that. So here we are observing one thing. If suppose we have the magnetic field, if the magnetic field will increase, so it will definitely increase the force also. If magnetic field is increase, so it will increase the force. If the charge will increase on the object, it will increase the force. I'm writing B. Okay, it was fine, yeah. So if the charge is increasing, it will increase force. If velocity of the object is increasing, it will increase the force. Okay, if the theta is increasing, it will increase the force, obviously. Okay, suppose we were having theta as 45, so it will have less force as compared to the theta if we will take that as if I will take theta as 1, or sorry, theta as 90 degrees. So okay, that is what I want to say. But also remember one thing, this is only just possible when we are increasing one component of this very formula and the another remains constant. Suppose this is F is equal to BQ V sine theta, and I am increasing the B. Okay, suppose I'm increasing the magnetic field. Magnetic field is I'm increasing, but at the same time the velocity is decreasing. So it will have no effect, or then we can say what will be the net effect. If the increase in magnetic field is more than the decrease in velocity, so the dominant one will prevail. But if it is opposite, suppose we told that if I am increasing B, so then you will have this confusion that force must increase. But remember one thing, it is only possible in such criteria when another constituents of this very formula, when they remain unaffected, okay, or when they remain constant. Let's have a more clear vision about it. Okay, so let me give you an example. Okay,
इसमें cursor. So suppose we have a particular charged object, moving charging object, charged object, moving charge object has how much? Has velocity 3 meter per second and has charge of 3 coulomb. So this is an hypothetical example, okay, just to make you understand and make you like do with this the formula usage, etc. Okay, and the magnetic field, okay, 3 coulomb, making angle 60° with the magnetic field of value 3 Tesla. Find force. Find the value of force. So we can find the value of force simply. We know the formula. F is equal to F is equal to B Q V sine theta. So now give the values. We have B as 3, Q as 3, V as 3 into sine 60°. Find its value. 3s are 9, 3s are 27 into we have sine 60 as root 3 upon 2. Okay, so this will be 27 times, or you can have like at this 27 divided by 2. You can do 2 1s are 2, 7, 2 3s are 6, 2 5s are, so it will be 13.5. okay, 13.5 root 3, and this is the answer. Or if you want to like give the value exactly about it, you can give the value of root 3 also, and you are done with the question. Okay, so this was about the force that will that a current carrying conductor in the magnetic field will experience. Okay, okay, now let's discuss about the electromagnetic induction. So you have studied about Oersted's experiment where he put a current carrying conductor, where he put a current carrying conductor, and then what he did is he put the compass needle, and that compass needle showed deflection. After that, what he did is he put it on a cardboard sheet, and then he sprinkled iron fillings on it. And to his surprise, what he observed that these fillings arranged themselves in concentric circles, okay, which was similar to the behavior of the magnet, and he introduced a new branch that we know as electromagnetism. Before that, it was considered that magnetism or the magnetization and electricity both are different concepts, but it was basically the Oersted who came to develop a sense of belonging between these two and developed a relation between these two, that they are interrelated with each other. Okay, this you might have that he gave life to this very branch. But there is another twist, my dear brothers. What is the twist? Let's understand that. We had another scientist, namely, let me first make a division. We had another scientist, namely Michael Faraday. Michael Faraday.
what he did is he was very curious about that. We know that electric current induces magnetic field, but can magnetic field induce a current? This was basically his idea, and he was thinking of curious about these things. Okay, so what he did is he took a circular current carrying conductor, not conductor, he just took a circular current carrying, not cur guys, wait for a while. He took a circular coil. Yeah, he took a circular coil, and then what he did is he connected that with a galvanometer. Galvanometer measures the presence of a current. Okay, suppose this was here, and then he took a magnet. This is a magnet. Okay, what he did is he wanted to check that the magnetic field lines, this is the north, this is the south, the magnetic field lines which are originating from north and going towards the south. He wanted to check that yeah, okay. He wanted to check, can this induce a current? When he took this and put it inside this very coil, nothing was seen. The galvanometer didn't show any deflection. That means the experiment has failed, and the Michael Faraday was to go to his home again, because the experiment is very, it is quite clear that we have failed in proving. That means magnetic field cannot generate electric current. But what happened when he took this magnet and slided it back? There was a deflection seen in this very galvanometer. It showed a deflection. It showed a deflection in left. So this is what we mean by, then he was curious about, like, thinking about it, how is it possible? And we call this as electromagnetic induction. Okay, let's understand it in much deeper way. So suppose this is my current carrying, not current carrying, a circular loop. I'm sorry, I'm again 100 times saying this thing. And this is our galvanometer. Okay, so this is our magnet. When we take this magnet, yeah, when we take this, okay, now it's fine. Yeah, give me a moment, guys. थोड़ा अच्छे से बनाते हैं. Oh, that's what I did. Previous. Yeah.
this is our magnet. Let's make our magnet more like that realistic type of. Fine, now it's looking something like real. Let's not color it. This is its south pole, sorry, north pole. And suppose this is it, south pole. Yeah. And this is its north pole, sorry, south pole. Okay, and we know that magnetic field induces, not induces, it has these magnetic field lines. So these are the magnetic field lines that are going through it. Okay, so what do you observe, that when we take this magnetic field, yeah, when we take this magnetic field and put this inside the, or like this here, nothing is seen. When we put this here, no deflection in the galvanometer is seen. But when we are like, when we are sliding it towards it, suddenly this galvanometer shows a deflection. There is basically a deflection seen when we put it. So when what he told is, he told in simplicity that there is a magnetic flux. Okay, what does magnetic flux mean? Formation of an induced current is due to the change in the magnetic flux. Magnetic flux means number of magnetic lines which are passing through this circular loop. When we are putting this inside it, so we are stopping the magnet there, so the magnetic flux remains constant, so there is no generation of the current. But when we do the same, when we are like sliding it towards it, there is suddenly change in it. There is change in the magnetic flux, due to which an electric current is generated. Okay, we can say that the magnetic field lines are increasing and decreasing during this very minute amount of time, and basically the magnetic field current is generated even for a very small period of time. But yeah, current is generated. If you will use this here instead of a galvanometer will show deflection for a very small period of time, and the bulb will glow for a very small period of time. But he told, when we reverse the process, that means we are taking this away, galvanometer also shows deflection. Galvanometer also shows deflection, but when we are putting it, when it moves in this direction, galvanometer shows deflection in right, and when we are moving in opposite direction, galvanometer shows deflection in left. Okay, galvanometer shows deflection is left. Okay, so he told that the change in the magnetic field is the main cause of the formation of the current. Now there is basically EMF. EMF means electromotive force. We use this generally for voltage on the name of voltage, and to separate it from the current, the electric current, we say the current generated as basically, sorry, we call the current as induced current. Okay, so magnetic flux I told you. So if you will see the value of magnetic flux, it is Weber. Okay, Weber is the magnetic flux value. So now how can we find the magnetic flux? Okay, magnetic flux is denoted by this phi, and it is equal to BA cos theta. So what is this B? B is the magnetic field, A is the area, and cos theta is the angle between the magnetic field and the area. Okay, so you can also find here like for the magnetic field that Weber per square meter.
per meter square. Here I'll show you how. So phi is equal to Weber. Magnetic field को उधर ही रखिए. How much is area? Area is meter square. इसको इधर ले जाइए. Weber per meter square is equal to B. Okay, you can also think like this. So what I mean to say here is that you can find it from sorry, not magnetic flux. You can find is equal to B I तो एरिया होगा A cos theta. This represents here, this is the magnetic flux, and this and this. Okay, this is magnetic field, this is area. Okay, now let's understand it in various situations. EMI in various situations. In various situations. So we have a suppose we have a conductor. Suppose this is a conductor, and these are the magnetic field lines. They are going inward. So this is, yeah, okay. See, a conductor when moves through a magnetic field, it will cut the magnetic field. See, it is cutting the magnetic field and it is generating current. See, the magnetic field line was 1, now there is this much, now there is this much, or let me tell you what we can do here. See, is there copying option, anything? Let me check if there is. You thank God there is. Yeah. So see, what I am going to do is, suppose these are the magnetic field lines. Okay, and this is the conductor. Okay, no. Now see. This is the conductor. It is moving here. See, there are different amounts of magnetic field lines. Here are different amount. Here are different amount. Here are. See, when it is entering, different amount. Current generated. Current generated. Current generated. Now these are same, because they are not changing. The one they are leaving, the one same it is entering into. Now here at the end, again the same thing will happen. So this is how the magnetic field lines is generated. So magnetic field, this electric field is generated. Also we have, when we have this coil, when it basically does what? When it is basically connected to a bulb, sorry, when it is connected to a battery, it will obviously generate magnetic field, and the another will also generate a magnetic field. It will be known as the induced current. Okay, that will induce the current due to the formation of this magnetic field for a very small fraction of time. Because suppose this was this, and when the current entered,
or when we close the switch, the current started to flow. At the same time, the galvanometer of this will show deflection, and when we will close, the deflection will be again seen, because when the current will keep on flowing, the magnetic field is constant. That means there is no magnetic flux, so no generation of induced current or no EMF is produced. Okay, so then we have this, suppose a magnetic field, and we are having this is basically rotating with 180 degree, like rotating here in the magnetic field. So there also the magnetic field will change and the current will be induced. Okay, so also there is, suppose we have, see, this is the current, sorry, this is not the current. हाँ जी, ये देखिए, ये हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है जिसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है. नाउ द मोर वी आर इंक्रीजिंग द एरिया, द मोर मैग्नेटिक फील्ड इट इज attached to, or like the attraction, or sorry, not attraction, the force. Now if you are decreasing its area, the force also decreases. You can see the magnetic field lines are increasing and decreasing, and this means that the force is also increasing and decreasing. Okay, so this was about it. So hope you liked it. In another video we are going to discuss about some more concepts related to it. Till then, tata, take care and bye bye.